Hello, all the students. Welcome once again. And today we are going to take the second session on English vocab. Students do understand whichever exam you people talk about, let it be CUET, let it be IPMAT, or any other UG exam. When we talk about English, directly or indirectly, vocab plays a very, very important role. And I generally see that a majority of the students, they actually face trouble in vocab only. Last year also, a good number of students, they came out and they said कि सर बाकी सारे क्वेश्चंस तो फिर भी हैंडल हो गए, ग्रामर फिर भी सॉल्व हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज नॉट सो टफ, बट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सीयूईटी में स्पेशली अगर कुछ था तो दैट वाज vocab. And that is the reason, students, ये जो छोटे छोटे वीडियोस in which we people are going to discuss five very important and most relevant questions based on vocab, which are actually based on the latest pattern. So I believe that if you people just keep following all these videos, if you people keep watching all these videos and icon careers को अगर अपना साथी बना लो in getting the best colleges of India, I think, students, the chances of you're getting the best colleges will enhance definitely. So if few people are damn serious कि सर IPMAT, Delhi University का CUET, Christ University, SET, NPAT, and whichever exam you people talk about, including Maharashtra CET, in सब के लिए these videos are going to help you a lot. So students, start करते हैं 5 questions की आज की journey. I want all the students who are watching this video, the moment I show the question to you, before you listen to my answer, think about what is the correct answer, and then you listen to the complete explanation. Students, in my explanation, I will not only give the answer directly, but उसके साथ मैं बहुत सारी चीजें और समझाता हुआ चलूंगा, वैसे बिल्कुल भी मिस मत करना. Okay? चलिए, here we take the very first question. Just one second. Now see, this very first question is actually based on analogy. स्टूडेंट्स vocab में भी क्वेश्चन पूछने के मल्टीपल तरीके होते हैं. कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां डायरेक्टली हमको बताना होता है सिनोनिम या फिर एंटोनिम. But many times we may come across such questions which are based on fill in the blanks. Again, there are multiple ways of asking questions. Confusing pairs of words. Sometimes the questions are based on figures of speech. Some, sorry. Sometimes the questions are based on idioms and phrases. And this particular pattern, which is actually known as analogy. So what is the meaning of an analogy? Analogy का मतलब है relationship. दो वर्ड्स में से हमें बताना है स्टूडेंट्स, जस्ट वन सेकेंड. यस, दो वर्ड्स में से हमें बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है. एंड देन अमंग द फोर ऑप्शंस वी नीड टू फाइंड आउट व्हिच पेयर हैज गॉट अ सिमिलर रिलेशनशिप. तो एनालॉजी का बेसिक मतलब होता है रिलेशनशिप. नाउ यू पीपल डू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज निमोनिक एंड द सेकंड इज मेमोरी. First of all, we need to understand what is the meaning of the word, and then only it is possible for us to establish the relationship. So when we talk about mnemonic, mnemonics are basically such techniques which help a person to memorize the things. अगर हमें अपनी मेमोरी को शार्प करना है, तो जो टेक्निक्स अपन यूज करते हैं, they are actually known as mnemonics. You people might have seen कई सारे मेमोरी गुरुज होते हैं जो hundreds of words को एक साथ बाय हार्ट करते हैं within seconds. On the basis of what? Such techniques are actually known as mnemonics. And इंडिया में तो स्टूडेंट जो पूरी एजुकेशन है वो रोट मेथड पर चलती है. तो many times it happens like students keep struggling कि सर याद नहीं रहता. तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है mnemonic. Anyway, mnemonic का मतलब है something which helps us in memorizing the things. So that becomes the kind of relationship. So which is the correct answer here? I think, students, the best answer here is sedative and sleep. So what is the meaning of sedative? Something which causes sleep. जैसे कई बार मैं देखता हूँ डॉक्टर्स भी जब कोई मेडिसिन किसी को रिकमेंड करते हैं तो मेडिसिन देते हुए डॉक्टर भी कहता है कि दिस मेडिसिन इज सेडेटिव. So possibly after taking it, you may feel sleepy, but that is what sedative is all about, causing sleep. For some of the students, possibly a class on English vocab can also become sedative. Is this the case? ओके नहीं ना, चलो दैट्स गुड. बेटर है कि इंग्लिश vocab सेडेटिव ना लगे. एंड vocab तो स्टूडेंट्स वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज इतने नए नए वर्ड्स सीखने का मौका मिलता है. तो यस, सेडेटिव का मतलब है समथिंग व्हिच कॉजेस स्लीप.
Hence, the correct answer is second option. Okay, I think you people are able to figure out there is a similar kind of relationship between the question pair and the second option. चलो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं स्लीप को. इंग्लिश में स्टूडेंट स्लीप के लिए एक रूट वर्ड आता है एंड दैट इज सोमनिया. सोमनिया becomes the root word. And when I talk about somnia, what does it mean? सोमनिया का बेसिक मतलब होता है स्टूडेंट स्लीप, एंड दैट इज द रीजन यू पीपल माइट हैव हर्ड मेनी टाइम्स. ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम इनसोमनिया. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसोमनिया? स्लीपलेसनेस. कई सारे लोगों के लिए ये एक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, उन्हें नींद नहीं आती. तो स्टूडेंट्स इनसोमनिया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है हाइपरसोमनिया. Isn't it? Now what is the meaning of hypersomnia? सर इतनी नींद आती है, आप जब चाहो तब सुला दो. तो रात को भी 10-12 घंटे सोएंगे, दिन में भी 2-3-4 घंटे सोएंगे. ऐसा लगता है ऐसे बच्चों का जन्म सोने के लिए हुआ है. So anyway students, these are the happiest people on this earth because सो जाओ and सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म. Isn't it? चलो anyway, हाइपरसोमनिया तो बहुत ज्यादा नींद आना. एंड देन स्टूडेंट्स एक और वर्ड आता है हाइपोसोमनिया. हाइपो का मतलब है नॉट वेरी गुड, नॉट स्टैंडर्ड. तो ऐसे हाइपोसोमनिया इसका मतलब है नींद तो आती है बट बहुत अच्छी नहीं आती. एंड दैट इज द रीजन इवन उठने के बाद भी बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं लगता. तो सच अ स्टेट इज नोन एज हाइपोसोमनिया. एंड मोreover स्टूडेंट्स 2-3 वर्ड्स और ध्यान में रखना. वन इज सोमनीलोकिस्ट. सोमनीलोकिस्ट. तो व्हेन आई से सोमनिया इसका मतलब है स्लीप. एंड कहीं पर भी स्टूडेंट्स अगर एलओक्यू है, एलओक्यू इसका मतलब होता है स्पीच. एलओक्यू का मतलब स्पीच. इसका मतलब है सोमनीलोकिस्ट. इट रेफर्स टू सच पर्सन्स जो नींद में भी कुछ बोलते रहते हैं. ऐसा होता है कई बार. और जब हम सुबह उठकर उसको कहते हैं यार रात को तू कुछ बड़बड़ा रहा था, तो वो मना करता नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं, पता नहीं वे. दिस इज समथिंग विच इज कॉमनली विच हैपन्स. एंड कई बार मैं बच्चों को भी देखता हूँ इतने वो क्या में इन्वॉल्व हो जाओ बस रात में अचानक से, ठीक है. और पेरेंट्स पर लगना चाहिए देखो क्या डेडिकेशन है, नींद में भी वर्ड्स बोले जा रहा है. तो सोमनीलोकिस्ट who keeps who speaks during sleep. And students, one more word is somnambule or somnambulist. So when I say amble, amble का मतलब होता है to walk. ओके, इंग्लिश में स्टूडेंट्स एक वर्ड आता है amble. amble का मतलब होता है to walk. So when I say somnambule, इसका मतलब है नींद में चलना. तो इसको अपन कहते हैं somnambule, somnambulist. ओके, अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ this becomes a direct question where you people have to find out nearest in meaning. इसका मतलब है हमें synonym पता करना है. And here students the word is pulchritude. Pulchritude. And what is the meaning of pulchritude? Pulchre. It is related to beauty. So students, if I compare all the 4 options, the only correct answer is attractive. So pulchritude is attractiveness. It is beauty basically. Okay, something which is attractive, which is beautiful, which is alluring. Okay, and then students, comeliness अपन कह सकते हैं. comeliness का मतलब भी pulchritude. comeliness. Okay, one more synonym can be taken as shapeliness. One more synonym can be taken as sublimeness. Okay, sublime का मतलब भी होता है something which is very soothing, very beautiful, understand. Okay, तो ऐसे बहुत सारे words possible हैं. So anyway, this becomes a very good habit of a student. Whenever you come across a new word, always think about इसके और possible synonyms क्या हो सकते हैं. Okay, the comeliness, shapeliness, sublimeness, ये सब इसके synonyms हैं. And the word is pulchritude. Understand? So here third option becomes the correct answer. Okay, done. चलिए, coming on students. Now this becomes a question which is based on figures of speech once again. कल वाली क्लास में भी स्टूडेंट्स हमने एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया था.
Now, you people tell me which is the correct answer here. Variety is the spice of life. I think students, when we compare two unlike things, and when we say that one is the other, and students, moreover, अगर अपन like or as use नहीं करते हैं, so that actually becomes a case of metaphor. So the first example, it actually becomes an example of metaphor. So what is the meaning of a metaphor? To compare two unlike things. Camel is a ship in the desert. So that becomes an example of a metaphor. But students, अगर मैं साथ में like या as लगा दूं, so that becomes an example of a simile. So if I make a sentence like, variety is like the spice of life, it becomes a simile. Otherwise, it becomes a metaphor. So anyway, students, ये metaphor है, इसमें कोई doubt नहीं. अब मेरे पास दो options है, one is oxymoron and one is antithesis. दोनों में कई सारे बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं. ऑक्सीमोरॉन का बेसिक मतलब होता है दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज करना. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से इट इज अ फ्रेंडली फाइट, व्हेन आई से इट्स अ फ्रेंडली फाइट, ओके, दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ओके, ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है? दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज करना. आई सी सम स्टूडेंट्स आर रेगुलरली इरेगुलर, दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. इट इज बिटरली स्वीट, ऑक्सीमोरॉन. डेफिनेटली मे बी, अब इट्स अ डेफिनेट मे बी. अगर डेफिनेट है तो मे बी कैसे हो सकता है? और अगर मैं फिर भी यूज करता हूं तो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. इट्स अ पीस कीपिंग फोर्स. पीस कीपिंग, शांति सेना. अब शांति और सेना दोनों एक साथ कैसे होगा? दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. एंटीथेसिस में स्टूडेंट्स अपन दो अपोजिट आइडियाज एक सेंटेंस में यूज करते हैं. एक यूं मान के चलिए दो अपोजिट फ्रेजेस को अपन एक साथ लेते हैं. जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं. When I make a statement like, or if we take an example, Neil Armstrong, when he kept his first step on the moon, okay, there was a famous statement made by him. He said, it's a small step for a man, but a giant leap for the mankind. So small step for a man, giant leap, okay, for the mankind. A small step and giant leap. तो स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये दोनों फ्रेजेस अपोजिट आइडियाज हैं. So that actually becomes an example of antithesis. The students, many are called, but few are chosen. So when I say many are called, but few are chosen, ये students opposite है. ये opposite words नहीं understand. ये oxymoron का example नहीं है. This actually becomes an example of antithesis. So when I make a statement like, to err is human, to forgive is divine. There is a famous saying, गलतियां करना is human, but माफ कर देना is divine. तो स्टूडेंट्स, ऐसे जो अपोजिट आइडियाज होते हैं, जब हम एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट विचार को एक साथ लिखते हैं, तो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस. एंड ऑक्सीमोरॉन में वी जनरली यूज टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर. So that is the basic difference here. And you people can certainly search for more examples. But बिना क्लैरिटी के कभी एग्जाम में मत जाना. एग्जाम में स्टूडेंट्स हमेशा मान के चलना, क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस आता है. ओके, चलिए, परफेक्ट. तो हियर द करेक्ट आंसर इज सी. यस, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. There are a number of specific issues left somewhat dash in the document. अब स्टूडेंट्स हमें बताना है, और ये चारों वर्ड्स ऑलमोस्ट इट सीम्स लाइक इन सबका जो ओरिजिन है दैट इज वन एंड द सेम. एंड एनीवे स्टूडेंट, जो पीपल डू अंडरस्टैंड एम्बी, किसी भी शब्द में जब एम्बी आता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बी? एम्बी बेसिकली स्टैंड्स फॉर बोथ. So if something is ambiguous, इसका मतलब है something which has got two meanings. When I say something is ambiguous, इसका मतलब है something which has got two meanings. Ambiguous. तो जिसके दो meanings होते हैं उसको अपन कहते हैं ambiguous. When I say ambiguous, that means clarity is not there. जैसे मैंने ऐसा कुछ बोला जिसके दो meanings आते हैं. Now you were not able to understand कि सर बोलना क्या चाहते हैं. So that becomes an example of ambiguous, ambiguity. We generally see that politicians, they are willingly equivocal. वो जानबूझकर एम्बिगुअस होता है. ऐसा कुछ बोलते हैं जिसके दो मीनिंग्स आ जाए, और कभी फंस जाए तो फिर वो कहते हैं नहीं मैं तो ये बोलना चाहता. दैट इज एम्बिगुअस, नॉट क्लियर.
एम्बिवैलेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स व्हेन यू पीपल आर इन अ डिलेमा इन योर माइंड। मैं कोई काम करूं या ना करूं, तो मन में दुविधा होती है, मन में डिलेमा होता है। तो जब मन में डिलेमा होता है स्टूडेंट्स, इसको अपन कहते हैं एम्बिवैलेंट। तो यू पीपल डू अंडरस्टैंड डिलेमा का मतलब है एम्बिवैलेंट डिलेमा। So when I say dilemma, there is conflicting opinion going on in the mind. मैं कोई काम करूं या ना करूं, तो जब ये conflicting opinions माइंड में चलता है, तो इसी को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं dilemma. So that is ambivalent. Okay? तो मन में dilemma होना, so that becomes an example of ambivalent. Now coming on students, sorry, what is ambidextrous? Ambidextrous का मतलब है, dexterous का मतलब होता है skilled होना. A person who is skilled is known as dexterous. तो any person जो अपने दोनों हाथों को equal skill के साथ यूज कर सके, उसे अपन कहते हैं ambidextrous. So when I say ambidextrous, someone who is able to use both of his hands with equal skill is known as ambidextrous. Okay? So you people may notice, जैसे आई एम अ राइट हैंडर, तो मेरा राइट हैंड ज़्यादा स्किल्ड है, पर कोई आदमी इतनी प्रैक्टिस कर ले कि लेफ्ट हैंड भी उतना ही स्किल हो जाए जितना राइट, या लेफ्ट लेग भी उतना ही स्किल हो जाए जितना राइट, ऐसे पर्सन को अपन कहते हैं एम्बी डेक्स्टरस। एम्बियंट का मतलब है सराउंडिंग्स। तो एम्बियंट बेसिकली स्टैंड्स फॉर सराउंडिंग्स, एम्बियंस। ओके, एम्बियंस। So there are a number of specific issues left somewhat ambiguous in the document. So here the best answer is second option. Okay. Here we are going to come on the last question of the day. And students, this becomes a question where a sentence is given to us. And on the basis of the sentence, we will have to guess which option is going to be the most relevant ETM. So with only half the syllabus studied, I had to make great hurry to be ready for the exam on Monday. So with only half the syllabus studied, I had to make a great hurry to be ready for the exam on Monday. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब डेडलाइन अप्रोच करती है, हमारे पास टाइम कम होता है, हमें बहुत जल्दी से चीज़ों को करना होता है. At that time, what is needed? Absolutely. So with only half the syllabus studied, I had to make great hurry. So here, the best answer is work against the clock. तो जब हमें स्टूडेंट जल्दबाजी में काम करना होता है, when we have to work against the clock, thus that is the work against the clock. The first option becomes the correct answer. Isn't it? Done? Perfect? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स. And by this the session gets over. And IPMAT and CUET को लेकर, if you're really serious, if you want to have the best of education and you people don't want to take a chance, I welcome you all to Icon Careers. Visit the website of Icon Careers and वहाँ पे free content में you will have lots of videos, demo videos. Watch karo, and then if you feel like, sir, I'm very confident, okay, you people can purchase the courses online. So thank you very much for being with us. See you soon in another video. Thank you.